Hi friends and students, I am Sudhakar Shukla with video related with tense based sentences. मित्रों, आज का ये वीडियो सेंटेंस टेंस पर आधारित कैसे बनाएं, how to frame sentences based on tense. We shall study about this pattern. In my previous video, I have told you about the kinds of sentences, and today, related with those sentences, especially affirmative, negative and interrogative, how such type of sentences are framed, what are the rules and what are the sequences and orders of the words in those sentences, I am going to tell you about this thing. I have already told you in my videos that tenses are 3 into 4 equal to 12, and in all 12 tenses there are affirmative, negative and interrogative sentences in all tenses. So let's learn how to make sentences related with tense. मित्रों, आज मैं टेंस पर आधारित वाक्यों की रचना को लेकर के आपके सामने आया हूँ. Sentences, as we know, are the group of words that have complete sense. I have told it. So, affirmative, negative, and interrogative. You know, affirmative sentences अगर हमें बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं. सब्जेक्ट डू यू नो, डूअर, वन हु डज द वर्क इज सब्जेक्ट. अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट पता करना है, सपोज हिंदी में भी सेंटेंसेस मिलते हैं, उनको ट्रांसलेट करना होता है. हमारे हिंदुस्तानी के दिमाग में हिंदी फर्स्ट आती है, देन वी ट्राई टू ट्रांसलेट अकॉर्डिंग टू आवर ओन माइंड एंड सेंस. दिस इज द प्रॉब्लम. सो if we want to identify the subject in the sentence, we should ask a question with who. कौन? Suppose दीपक क्रिकेट खेलता है. अब इसमें बात करेगा कि कौन क्रिकेट खेलता है, आंसर मिला दीपक. तो दीपक should be subject there in that sentence. और ऑब्जेक्ट यहाँ अगर अफर्मेटिव बनाते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट, then second helping verb, then main verb, then object, then remaining words, other words, then full stop. सब्जेक्ट को पता करना है तो कौन से क्वेश्चन करें, आंसर में जो वर्ड मिलता है that will be subject. And object, if you want to identify what the object in that sentence, so you should ask a question with क्या और किसे, what or whom. And the word that you will get in answer of this question, that will be object of the sentence. आप क्या से कौन से क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्ट मिलेगा. क्या या किसी से क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा. और एक्चुअली जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं, ऑक्सिलरीज में से ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं. मैंने आपको इसके पहले जब टेंस का क्लासिफिकेशन किया था, मैं टेंस फैमिली का, तो उसमें सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब वो मैंने बताया था. तो जिस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को आप बना रहे हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएं. सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, हियर इज अ सेंटेंस, वे लोग शतरंज खेल रहे हैं. हिंदी के सेंटेंस में लास्ट से एंडिंग से हम पता करते हैं कि किस टेंस का है. रहा है, रही रहे, इट मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. काम कंटिन्यू है. खेल रहे हैं, इट मींस खेल रहे हैं, खेलना जारी है. जारी होना मींस कंटिन्यू होना. दैट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. दिस वन सेंटेंस इज अफर्मेटिव एंड इट इज फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो लेट्स ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. This sentence is from present continuous and it is affirmative. So the structure says first we have to put subject.
हियर कौन शतरंज खेल रहे हैं? वे लोग। इट मीन्स सब्जेक्ट को पहले लिखिए तो दे, देन हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज आर एम होती है, तो इज लगाएं कि आर लगा दें कि एम यूज कर लें, इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। दे, या तो कोई प्लूरल जो होता है या यू हो, वी हो, तो ऐसे के साथ आर यूज करते हैं। एम इज यूज्ड विद आई ओनली, एंड in third person singular or with third person singular we use is or am. These are the helping verbs of present continuous. So let's come to the point. They subject, are helping verb, play main verb, and one thing more we should mind while translating, form of verb should be according to the tense, because in each and every tense the form of verb is decided, helping verb is also decided. Hence we should know in continuous tense we use verb plus ing, present participle form. That's why they subject are actually playing ing form, because continuous is there. They are playing, then क्या खेल रहे हैं? चेस। क्या है? किसी से ऑब्जेक्ट मिलता है तो चेस इज ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स है नहीं। अगर यहीं पर होता कि वे कमरे में शतरंज खेल रहे हैं, वे लोग कमरे में शतरंज खेल रहे हैं, कमरे में जब हम लिखते हैं तो यहाँ इन द रूम, ये अदर वर्ड हुआ होता। सो किसी भी, सपोज आप किसी दूसरे टेंस का सेंटेंस लेना चाहते हैं, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, आप किसी दूसरे को लीजिए, लेट्स टेक अनदर सेंटेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टेंस। Suppose दीपक चाय बना रहा है, रहा होगा नहीं, दीपक चाय बना रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। Pattern and structure is same, sequence of the sentence, order of the words are same. Subject Deepak, helping verb future continuous will be, then verb बना रहा होगा, making, boiling or preparing. बॉइलिंग, बिकॉज टी को बॉयल किया जाता है, प्रिपेयर करना भी, तैयार करना होता है, मेक मीन्स बनाना था, बॉइलिंग। अब क्या बना रहा है? टी। इन दिस वे आप जिस भी टेंस में जाते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब शुड यूज द हेल्प ऑफ कंसर्न्ड टेंस, एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स शुड बी दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। इतनी कुर्सियां आप लगा दें और इनमें ऑर्डर से बिठा दें आप वर्ड्स को। सो अगर हम इसको उल्टा पलटा लगा दें, वर्ड्स तो ये है, टी बॉइलिंग दीपक विल बी। If we write in such sequence, then translation, then words will be in general order. So sentence means the proper sequence of words, proper group of words that gives complete sense each sentence. Affirmative. Let's come and talk about negative sentence. Same thing is there. One thing is extra added here. Subject, helping verb, not. Verb का जो correct form, the required form according to the tense. Verb, then object, then other words. Suppose सत्यम चाय नहीं पिया था. Here is tense, past perfect. लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी. In this way, if the Hindi sentence ends, come to the end, it means past perfect sentence. Past perfect tense is there. We should know. सत्यम चाय नहीं पिया था. Past perfect tense. Subject कौन? सत्यम. तो सत्यम helping verb had, past tense, past perfect, not for negative sense, and form of verb what should be? Third form. Take, to, taken.
taken ऑब्जेक्ट टी। सत्यम हैड नॉट टेकन टी। आप किसी भी टेंस का बना सकते हैं ऐसा नेगेटिव, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा लें और उस टेंस का जो फॉर्म लगता है वो लगा लें। आप एक टेंस से दूसरे टेंस में इसी वे में जा सकते हैं। स्टूडेंट्स शुड बी टोल्ड सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बिकॉज इन देयर एग्जामिनेशन, इन देयर क्वेश्चन पेपर, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन डू एज डायरेक्टेड सेक्शन। सपोज one sentence, affirmative sentence has been given in their question paper and it is asked to change it into interrogative sentence. So how can we change the affirmative into interrogative in such order? If this is the sequence of sentence, this should be while changing into interrogative. affirmative का structure, negative का structure, आप किसी और टेंस की बात कर रहे हैं? Let's talk about any other sentence, any other tense. मैं आज हिंदी नहीं पढ़ूंगा। Future indefinite negative sentence. Subject I, helping verb. If there is confirmation, then will should be used with all kinds of subjects. I will or shall. I will shall is used. So let's shall or will. I will not. Here auxiliary verb, here not. I will not read or study Hindi today. I will not read or I will not study Hindi today. So such type of structure, such type of order of the words is followed to make negative sentences. Again, interrogative, very important kind of sentence. Interrogative. Suppose interrogatives have two kinds: type 1, type A and type 2, type B. Interrogative दो तरह से बनाए जाते हैं। एक हिंदी में जब क्या से स्टार्ट होता है, in हिंदी sentence क्या must come in the very first, in the very beginning of the sentence. But for this kya, what word is not used? Not at all. We will not use what for kya. So the structure of interrogative type 1 goes like this one: helping verb, then subject. Here subject, then helping verb. If we shift subject into a helping verb in the place of subject and subject in the place of helping verb, only if we make two changes in the beginning, we will get interrogative structure. So helping verb, then subject, then form of verb, related verb according to the tense, then object, then other words, then question mark. क्या अर्पिता टीवी देख रही थी? एक चीज को ध्यान रखिए, इस प्रकार के in such type of interrogative sentences we will get the answer yes or no. So such type of interrogative sentences are called yes no type question. क्या अर्पिता टीवी देख रही थी? अगर कोई पूछता है तो अर्पिता आप यही कहेंगे कि हाँ यस सर, या तो बोलेंगे नहीं देख रही थी, जैसे भी स्थिति रहेगी। ये yes no type के क्वेश्चन होते हैं। Structure से let's translate was verb, past continuous में helping verb was verb, तो अर्पिता के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में was, प्लूरल के साथ में verb और you के साथ चाहे वो सिंगुलर प्लूरल तो verb। was helping, अर्पिता subject, watching ing form according to the tense, watching then object TV. Question: was Arpita watching TV? Do you like tea? Do you like
टी, क्या आप चाय पसंद करते हैं? डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पसंद करते हैं? सो किसी और टेंस का भी इस तरीके से जो बनता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें, स्टूडेंट्स, सपोज we have finished our studies and we are going to face any kind of interview in a department. So the persons who will be sitting in the interviewer committee before you, they'll ask questions, and those questions will be interrogative type 2. अब जिसे हम पढ़ाने जा रहे हैं वो इंट्रोगेटिव टाइप 2 है, और वो जिंदगी के हर मोड़ पर रहते हैं. You will get questions from the people all around. Wherever you go, people will ask something, and that question or those questions will be in interrogative type 2 pattern. इंट्रोगेटिव टाइप 2 का फॉर्मूला मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी देर में, लेकिन वो चीज़ जो होती है वो है इंटरव्यू में या तमाम हम बहुत सारे जो हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं, all those questions are in interrogative type 2 pattern. कोई क्वेश्चन करता है, हम उसको अफर्मेटिव या नेगेटिव के स्ट्रक्चर में जवाब देते हैं. So let's come and study about interrogative type 2. Interrogative type 2. Here it is. Intro type 2, it means B. This one type 1 है. इसके ठीक पहले हिंदी में बात करेंगे, हिंदी सेंटेंस में यहाँ तो क्या लगा है, बट इन इंट्रोगेटिव टाइप 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा. अर्पिता टीवी और जो वर्ब है ना देखना, इसके ठीक पहले क्वेश्चन ही पड़ेगा. अर्पिता टीवी कहाँ देख रही थी, अर्पिता टीवी कब देख रही थी, अर्पिता टीवी क्यों देख रही थी. तो कब, क्यों, कहाँ, जो क्वेश्चनिंग वर्ड है WH words, they come in Hindi sentence, they come before verb, and in English we start with that questioning word. So इसके ठीक पहले अगर हम क्वेश्चनिंग वर्ड को हिंदी में जो यहाँ पर लगा होगा उसको निकाल के बिल्कुल फर्स्ट कर लें. इंट्रोगेटिव टाइप 2 फॉर्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव टाइप 2 goes like this. Questioning word QW. Some people say WH word. What, when, why, where. WH से शुरू होता है, लेकिन how वो तो WH से नहीं होता है, H OW H से शुरू होता है. So questioning word, let's say questioning word, then helping word, then subject, then verb, then object, then other words, then question mark. In this way, interrogative type 2 is framed. Suppose आप विद्यालय क्यों जाते हैं, This one is question. आप विद्यालय क्यों जाते हैं. So ट्रांसलेट करना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हेल्पिंग वर्ब डू डज से कुछ लगेगी. पहले ही हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड चाहिए, तो क्यों इट मीन्स व्हाई, और व्हेन तो नहीं लिख देंगे, व्हाई, देन हेल्पिंग वर्ब. Helping verb is used according to the subject. Up means you. You is in second person. So why you? Then subject you. Then verb V1. Root form of the verb in this one. Go to school. Here is not object. वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए ऐसा बहुत आवश्यक नहीं होता. तो चूंकि कहाँ जाते हैं से जवाब लेना है इसको. सो इन दिस वे
interrogative type 2. We can take more and more examples to solve, to translate more and more sentences. Students should be told these are the structures of affirmative, negative, interrogative type 1. It means yes no टाइप, और ये फुल सेंटेंस में आंसर देना पड़ता है इनका। आप विद्यालय क्यों जाते हैं का जवाब आप ये नहीं कह देंगे कि यस सर, नहीं, आप बोलेंगे हम विद्यालय में कुछ सीखने जाते हैं, हम विद्यालय पढ़ाने जाते हैं, हम विद्यालय पढ़ने जाते हैं। आपको इस तरीके का आंसर देना पड़ेगा। इट मीन्स ये फुल सेंटेंस में आंसर गिविंग जो सेंस निकलता है वैसे सेंटेंस है, और ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। Why do you go to school? Suppose somebody asks you and you will not answer him by saying yes sir, no sir, not at all. I go to school to learn something. Sir, I go to school to learn something. This should be the answer of this question. So full sentence में आंसर देना पड़ता है इनका इस तरीके से। One thing more I would like to tell you, my dear students and friends, affirmative sentence का इसके पहले मैंने फार्मूला लिखा था, उसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट होता है, बिकॉज उन्होंने वर्ब के दो फॉर्म अपने साथ लिया हुआ है, तो उन दोनों में सब्जेक्ट के बाद only in affirmative sentence of those tenses after subject HV is not used. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ की जाती, बल्कि सीधे सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब यूज़ होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब में एस ई एस फॉर्म लगता है, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कुछ होता है कि यू दे तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट चाहे जो भी हो उसके साथ V2 का यूज होता है। इट मीन्स दो टेंस के अफर्मेटिव में HV माइनस रहती है, और 10 टेंस के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद HV देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स लगते हैं। So these things are very important for beginning process to teach the students about translation. सेंटेंसेस की बात करें तो सेंटेंस तो वन वर्ड सिंगल वर्ड का भी सेंटेंस होता है। गो इट मींस जाइए, इंपेरेटिव है। आई गो मैं जाता हूँ। Such type of sentences are also framed, but today I have tried to tell you about affirmative, negative and interrogative sentence formation which are based on tenses, and in my previous video I had told you that in next video I will come before you with easy one formula and with easy one examples how to frame these sentences, how to study about tenses and sentences of the tenses, and how to make it easy to our students to learn them, how the sentences are formed. The more examples you will get, the better you will learn. So many examples can be given, but I think for today's video that's all, and we shall study something new in my next video. So don't forget to subscribe my channel, and with good wishes, that's all. Thank you.